Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 20th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो आज का हमारा पहला न्यूज है ज्ञान सहायक स्कीम फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स रिलेटेड. Recently, Gyan Sahayak scheme has been introduced by the Gujarat state government, which has stirred controversy facing opposition from the various quarters of the society. रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो ज्ञान सहायक स्कीम लॉन्च किया था उसमें बहुत सारी ऐसे क्रिटिसिजम्स हैं जो सोसाइटी लगभग कर रही है. क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई दिस स्कीम हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, थोड़ा समझते हैं. देखिए ज्ञान सहायक स्कीम जो है इट सीक्स टू एड्रेस टीचर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स अंटिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर फाइनलाइज. मतलब ये एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट फाइनलाइज नहीं होता. Many states in India has opted for the contractual filings of the government job vacancies ever since the regime change in 2014. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज को अपनाया है, कॉन्ट्रेक्चुअल फिलिंग्स को अपनाया है जो गवर्नमेंट जॉब्स में हो रही थी. पहले परमानेंट होता था, अभी क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बहुत सारे देखे होंगे आपने, टीचर्स देखे होंगे आपने, बहुत सारे वर्कर्स वगैरह देखे होंगे. इवन आप देखिए कि रेलवेज वगैरह में ही बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ही हो रहे हैं, तो परमानेंट जॉब नहीं है वो. ज्ञान सहायक स्कीम क्या है? द स्कीम एम्स टू टेम्पररी फिल टीचर्स पोजीशन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स अंटिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स कुड बी मेड. पहला. दूसरा, द स्कीम ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हिच एम्फसाइजेस द नीड फॉर टीचर्स विद इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स. ठीक है, एक तो ये रहा. दूसरा, स्कोप क्या है स्कीम का? तो सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी. द ज्ञान सहायक स्कीम इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट्स एंड ग्रांट इन एड स्कूल्स पर्टिकुलरली मिशन स्कूल फॉर एक्सलेंस. दूसरा, वैकेंसी स्टैटिस्टिक्स. द गवर्नमेंट अनाउंस द हायरिंग ऑफ 15,000 ज्ञान सहायक्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स एंड 11,500 फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स. ठीक है. थर्ड, सैलरी स्ट्रक्चर्स. ज्ञान सहायक रिसीव varying monthly salaries based on their school level, that is 21,000 for primary, 24,000 for secondary and rupees 26,000 for higher secondary. Fourth, vacancy context. Gujarat reports an estimated 32,000 teaching vacancies in government and grant in aid schools, primarily facing primary and secondary schools. Some secondary schools rely on pravasi teachers to meet staffing needs. ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन थे आपके ज्ञान सहायक स्कीम से रिलेटेड. चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो है गगनयान मिशंस. And ISRO detailed about the Gaganyaan mission test vehicle demonstration 1, that is mission which is scheduled for tomorrow. कल इसका टेस्ट लॉन्च होने वाला है इसरो का गगनयान मिशन का. ये टेस्ट व्हीकल होगा डेमोन्स्ट्रेशन 1 विच विल डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रू स्केप सिस्टम. ध्यान रखिएगा ये एक स्केप सिस्टम है जिसका कल टेस्ट होगा और देखा ये जाएगा कि क्या ये जो जो स्केप सिस्टम है जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हमारे क्रू इससे निकल के भाग सकते हैं कि नहीं, या उस प्रॉब्लम मतलब मान लीजिए अगर कुछ वहां पर दिक्कत हो जाए तो एक लाइफ सेविंग ये एक तरह का मिशन होगा. है क्या ये a flight test vehicle abort missions? ये क्या है? The objective of the mission is to involve launching a rocket to an altitude of approximately 17 kilometers followed by a simulated abort signal resulting in the separations of the crew module. Safety test. The crew module will descend safely using a parachute, ultimately splashing down in the Bay of Bengal. Duration क्या होगा? The comprehensive test mission is scheduled to last 532 seconds from liftoff at 8 a.m. to the crew module splashdown situated about 10 km from the Sriharikota coast. Empty module होगा. It's important to note that the crew module will remain uncrewed during the test. इसमें कोई crew वगैरह नहीं रहेंगे. Next, ये टेस्ट क्या, व्हाट विल बी टेस्टेड. टेस्ट क्या किया जाएगा इसमें? देखो सबसे पहला तो टेस्ट ये किया जाएगा कि न्यू टेस्ट व्हीकल कैसे काम कर रहा है. द मिशन इंट्रोड्यूस द न्यू टेस्ट व्हीकल aptly named test vehicle demonstration 1 and designed specifically for testing system and procedure. मतलब एक तो सिस्टम को टेस्ट करेंगे और प्रोसीजर को टेस्ट करेंगे. दूसरा, क्रू मॉड्यूल फंक्शनैलिटी. ए बेसिक वर्जन ऑफ द क्रू मॉड्यूल, द कैप्सूल इन विच एस्ट्रोनॉट्स विल इवेंचुअली जर्नी इनटू स्पेस will be tested for functions such as mid-flight emergency crew module separations and astronauts escape. Testing terminology. ISRO technical definitions of the mission is in-flight abort demonstration of crew escape system which simulates abort conditions during ascent corresponding to a Mach number of 1.2, a critical aspects of the Gaganyaan missions. दूसरा, new test vehicle. Cost effective testing. The test vehicle demonstration 1 missions employ a low cost test vehicle
optimized for system testing instead of the more expensive GSLV Mark III rocket used in previous tests. Second, innovations. It uses existing liquid propulsion technology but includes innovations such as the throttleable and restartable L110 Vikas engine. नेक्स्ट क्रू एस्केप सिस्टम जो होगा ये एक तो सेफ्टी प्रेसिडेंस होगा द टीवी D1 missions underscore ISRO unwavering commitment to astronaut safety, particularly in emergencies. Environmental control system. ISRO is actively developing environmental control and life support system for the crew modules. Second, integrated vehicle health management. The program includes an integrated system to monitor the vehicle health and initiate mission abort procedure when necessary. Next, testing milestones. Some of these systems will previously assessed in the crew module atmosphere re-entry experiment and the pad abort test PAT in 2018. तो ये कुछ सिस्टम्स है जो क्रू एस्केप सिस्टम को लगभग टेस्ट करेगा. नेक्स्ट, गगनयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैन फ्लाइट टू स्पेस, ये होगा हमारा, एंड द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन August 15, 2018, and it will send the 3-member crew to space for at least 7 days by 2022. But ISRO hopes to deploy its biggest rocket GSLV Mark III for this project, and it would be one of the cheapest manned space flight in the world, with the estimated cost of not more than 10,000 crore. That is 10,000 crore के लगभग इसकी लागत आएगी. India plans to call it astronauts Vyomnauts, and since Vyom in Sanskrit means space. ठीक है, so that is regarding the गगनयान missions. चलिए अपने अगले मिशन पे चलते, चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. अगला जो अपना न्यूज है वो राफा क्रॉसिंग. आई एम श्योर आप सबको मालूम होगा, रिसेंटली इसराइल और गाजा स्ट्रिप में, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है और ये गाजा स्ट्रिप को लेकर हो रहा है. इसमें रिसेंटली आपने सुना होगा कि गाजा में जो हॉस्पिटल उस पे करीब एक बॉम्बिंग हुई थी, या वहाँ के जो हमास जो थे, हमास जो रेबल ग्रुप्स है या जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके मिस फायर ऑफ रॉकेट के चलते शायद वहाँ पर हॉस्पिटल्स में अटैक हुए थे, या जो भी हो, एक दूसरे को तो लोग यही कह रहे हैं. तो रिसेंटली द राफा क्रॉसिंग बिटवीन, राफा ये रीजन पड़ता है, देखिए ये आपको गाजा स्ट्रिप दिख रहा होगा, ये पूरा इसराइल है और इसराइल का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, इधर में इजिप्ट है और ये पूरा एरिया इसराइल से ढका हुआ है. एक तो एरेज क्रॉसिंग होता है गाजा का और दूसरा है राफा क्रॉसिंग. ये दो ही क्रॉसिंग है जो गाजा स्ट्रिप के लोगों को जाने को मिलता है. जैसे ये पूरा एरिया बाउंडेड है, ठीक है, एक तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं और एक इधर क्रॉस कर सकते हैं जो इजिप्ट के अंदर खुलता है. So Egypt is the only country apart from the Israel to share a border with the Gaza Strip, which is home to 2.3 million people. The Rafah crossing between Egypt and Gaza is the sole route for aid to enter Gaza from outside Israel, and the only non-Israeli exist. ठीक है. Rafah crossing. Recently, Palestinians have been gathering at the Rafah border crossing with the Egypt in the southern Gaza Strip. Meanwhile, Egypt has opened the border of UN for UN humanitarian aid for Palestinians. So recently, Egypt ने अपना जो राफा बॉर्डर उसको खोल दिया. नेक्स्ट है क्या ये राफा क्रॉसिंग इज ए बॉर्डर क्रॉसिंग point between the Gaza Strip and the Egypt located in the southern Gaza Strip. It serves as one of the few access points for people and goods to enter or exit the Gaza Strip, which is a Palestinian territory along the eastern coast of the Mediterranean Sea. Egypt has maintained strict movement restrictions at the Rafah crossing for years, raising concern that is indirectly support Israel-Gaza blockade, which begins in 2007 after Hamas took control. तो ये कुछ रीजन है, दैट इज द राफा क्रॉसिंग के टाइप है. सेकंड जो है इजिप्ट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन. रिसेंटली सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे. सिक्योरिटी कंसर्न इन नॉर्थ ईस्ट सिनाई वेयर इजिप्ट हैज बैटल्ड jihadis linked to Al-Qaeda have largely justified these restrictions. Avoiding exodus, Egypt may be reluctant to open the crossing without clear conditions and guarantees to avoid a mass exodus of the Palestinians from the Gaza. Responsibility concerned, Egypt is concerned about being responsible for a large influx of Gazan if the crossing is opened indefinitely. Permanent resettlements, Egypt is reluctant to facilitate a permanent resettlement of hundreds of thousands of Palestinians from Gaza. So that is regarding Egypt's role and restrictions. Next, copyright protections for religious text. इसको थोड़ा समझ लेते हैं. Recently, the recent ruling of the Delhi High Court has brought attention to copyright infringement concerned religious texts, particularly the Bhakti Vedanta book trust works on Indian religious philosophy and spiritualism. तो हमारा जो भक्ति वेदांता है उसकी copyright infringement की बात आई है. And this landmark case addresses copyright protections for sacred text and the implications for the digital platforms.
तो आर रिलीजियस टेक्स्ट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड? क्या ये जो हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है क्या वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है कि नहीं? तो सबसे पहला पब्लिक डोमेन में क्या है? द मोस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सच एज द ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन. कॉपीराइट लॉ डज नॉट अप्लाई टू द वर्क इन द पब्लिक डोमेन. जो पब्लिक डोमेन है उसका कॉपीराइट लॉ अलाउ नहीं होता है. एक्सेप्शन क्या है? मॉडर्न ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट लाइक द न्यू इंटरनेशनल वर्जन्स of the Bible may enjoy copyright protection as they represent new creative work by the translators. Protections. Additionally, transformative works like television adaptations of epics like the Ramayana and Bharata are protected. ये protected है, ठीक है. Next, copyright law in India क्या बोलता है? The scope of protection. The Indian Copyright Act of 1957 safeguard original works, creative expressions independently created and fixed in a tangible medium. Exclusive right. It grants exclusive right to creators, authors, including the right to use, produce, distribute, perform, and display their work. Transformative work. The act also protects transformative work which creatively modify, reinterpret, or build upon existing materials to create something distinct. Next, Delhi High Court की ruling क्या था? The copyright protection. The court ruled that adaptations of sacred scriptures, including explanations, meaning, interpretations, and audiovisual works, are entitled to copyright protection because they represent original works by author themselves. Reproductions, clarifications. While the reproduction of the actual text of sacred texts, such as the Srimad Bhagavad Gita, is permissible, and the court emphasized that the copyright protection applies to the original part of the literary works that preach, teach, or explain the scriptures. Third, trust right क्या है? Given that Srila Prabhupada and entrusted the copyright to be administered by the Bhakti Vedanta Book Trust, and the court emphasized that the work cannot be reproduced without the trust authorizations, license, or permissions. Fourth, preventing privacy. The court acknowledged that unauthorized reproduction, including shlokas, translations, and interpretations by different entities, would result in immense revenue loss for the trust. तो ये कुछ recently दिल्ली हाई कोर्ट की rulings थी. So this is regarding the Delhi High Court rulings on the copyright right of our spiritual text. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. Take care.